Good morning, student. So today we're going to learn about nitrogen cycle and why is it important. So dear student, our body is composed of protein. Our body is made of cells, and cells are made of cell membrane, and they are composed of proteins. And so many things in our body as well in plants are made of proteins. Like vitamins are having nitrogen. In every living cell system is having nitrogen. Protein is having nitrogen. Vitamins is having nitrogen. Then chlorophyll in plants is having nitrogen. And there are so many things they are composed of nitrogen. And there is importance how that we have to take nitrogen in our body, but we can't take atmospheric nitrogen directly from air. Neither plants can take directly. So how this nitrogen is fixed into certain compounds that it is absorbed by plants, then we eat from plants, and how it returns to the environment. Let us understand. So first of all, we must know that nitrogen is present 78% in the atmosphere, but we can't just take nitrogen as we take oxygen from the atmosphere. Like when we inhale, oxygen is absorbed. Okay, oxygen is, we can say, goes inside the lungs and then it is diffused in the blood cells. But it is not so in the case of nitrogen. Nitrogen is not taken in this way. So let us understand how. So first we have to understand nitrogen fixation. Like there is 78% nitrogen in the atmosphere, but it is not directly absorbed by human beings, animals or plants or any living creature. But how it is converted and absorbed, certain bacteria and blue-green algae present in the soil converts atmospheric nitrogen N2 gas into certain nitrogenous compound like nitrates, then nitrites, and these compounds are then absorbed by plants. Like when plants is absorbing water and minerals, this compound gets soluble and they comes in the plants. So while absorption of water from roots, such compounds are absorbed. Sodium nitrate, ammonium nitrate. So this nitrate, NO3 minus 1, nitrate, nitrite. These are ions, nitrate, nitrite. These are absorbed. Sodium nitrate, NaNO3, ammonium nitrate, NH4NO3. Okay, this nitrate and nitrite are absorbed by plants, but they are these are formed by nitrogen gas present in the atmosphere. So this nitrogen gas is converted into nitrate and nitrite by certain bacteria and blue-green algae. So in this way, this bacteria and blue-green algae fix the atmospheric nitrogen into the nitrogen compound, and this process is known as nitrogen fixation. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, मतलब नाइट्रोजन को इस तरह कन्वर्ट करते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो प्लांट एब्जॉर्ब कर पाए. तो प्लांट कैसे एब्जॉर्ब कर पाते हैं? प्लांट्स मिनरल्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं ना, वाटर एब्जॉर्ब कर पाते हैं रूट्स में, सॉइल में से. तो सॉइल में जब नाइट्रेट या नाइट्राइट होता है, NO3 माइनस, NO2 माइनस, उसके कंपाउंड्स होते हैं जैसे सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, है ना, क्या पोटेशियम नाइट्रेट. तो ऐसे कंपाउंड्स अगर जमीन में होंगे तो पानी के साथ सॉल्युबल होकर वो प्लांट्स में आ जाएंगे. बट जमीन में ही कैसे आएंगे? फॉर एग्जांपल प्लांट्स बार बार लेगा तो जमीन में कम हो जाएंगे, है ना. तो हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है, N2 गैस, वो कन्वर्ट हो जाता है इन नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, and then it is composed in the soil. It is then spread in the soil, and this is done by certain bacteria. They are known as nitrified bacteria. So this bacteria converts this atmospheric nitrogen into the compounds of nitrate and nitrites, and this process is known as nitrogen fixation, and then it is absorbed by the roots. I hope you understood. Okay, now let us understand. So this, what is nitrogen fixation? How can we define? Certain bacteria and blue-green algae fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. This is known as nitrogen fixation. Okay, let us understand. 78% of nitrogen is in air. Okay, in the form of N2 gas, and it is converted into nitrates and nitrite compound. Nitrogen fixing bacteria, blue-green algae fix nitrogen. When I say fix,
it means they convert into nitrates and nitrites. Okay, so they convert into nitrate and nitrite, then they are converted into nitrogenous compound. Okay, that is means same ammonium nitrate or potassium nitrate and so on. Then they are present in soil. Okay, these are present in soil, which is taken by plants. So plant take this nitrate, nitrites, and they make proteins, chlorophyll, different compounds, and animal eat plants ultimately, herbivorous or in this way. For example, carnivores also are eating herbivorous. So ultimately the protein is passed on. So plants are eaten by animals, and if these animals are eaten by another animals, carnivores, then also its protein is going in the animal body. But if these animals and plants die, what happens? For example, animal and plant die, nitrogenous waste from the excretion and death. So what happens when a person or human being or animal or plants die? That bacteria convert. Okay, bacteria convert their proteins. For example, प्लांट्स के अंदर प्रोटीन आग बन गया है, प्लांट्स को किसने खाया है? एनिमल्स ने, और उस एनिमल को किस और एनिमल ने? कार्निवोरस ने खाया. ओके, बट अल्टीमेटली व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाइज, व्हाट हैपेंस? बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स. ओके, माइक्रोऑर्गेनिजम्स उनको डिकम्पोज करते हैं. दे कन्वर्ट और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इनटू सिंपल अमीनो एसिड, वी कैन से नाइट्रोजन कंपाउंड. तो हमारे में जो कॉम्प्लेक्स बन गया उसको अगेन सिंपल करके सॉइल में लेके आ जाते हैं. तो यहाँ पे हमने प्लांट्स के अंदर नाइट्रेट्स आया, प्लांट्स में लिया, एनिमल्स से खाया, और जो प्लांट्स एनिमल बढ़ जाते हैं वापस से उस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड का वेस्ट होता है. हमारी बॉडी में यूरिया भी इवन हम जो यूरिन करते हैं वो उसके अंदर भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है. इसी तरह से वापस सॉइल में आता है. एंड एक्सक्रीशन आल्सो कंटेन नाइट्रोजन, एंड इवन व्हेन पर्सन और एनिमल्स और प्लांट्स डाई, their body is decomposed and converted into nitrogenous compound. And now we have denitrifying bacteria. कुछ होते हैं डीनाइट्रिफाइड बैक्टीरिया. जैसे कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स में. वैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सॉइल के नाइट्रोजन कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में. तो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? हवा के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स में. और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जमीन के नाइट्राइट कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में. You can see, so after person die, animals die, their body complex protein is broken down to compound of nitrogen, and these are converted by bacteria into nitrogen gas. तो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? हवा के नाइट्रोजन को कंपाउंड बनाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जमीन के नाइट्रोजन कंपाउंड को गैस बनाते हैं. So in this way it returns to the atmosphere. और हाँ, लाइटिंग की वजह से when lighting occurs, बिजली होती है, it has so much power that it can break nitrogen bond, strong bonds, and it can convert into different compounds. So उससे भी होता है. दूसरा एक वे है एसिड रेन. एसिड रेन से क्या होता है? हवा का जो नाइट्रोजन है वो पानी के साथ मिक्स होकर क्या बनाता है? नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. सो उस तरीके से भी वो नाइट्रोजन नाइट्रेट बन के आता है जमीन में. सो इन दिस वे इट इज अ साइकिल. बैक्टीरिया convert atmospheric nitrogen compounds. These compounds are taken by plants. Animals, when they die or when they excrete or waste material, it is again converted into compounds of nitrogen, which is converted by atmospheric nitrogen by some bacteria. So in this way, this is nitrogen cycle absorbed. So you have to learn this. We can say flow chart and nitrogen cycle. If you have any doubt, you can ask.